So we have already seen about the carbohydrate, but from today we are going to start regularly. Okay? On a Monday, Tuesday, Friday, and Sunday. For your batch, I am going to taking sessions from 6 to 8 p.m. on Monday, Tuesday, Friday. So you should be clear regarding this कि आपका lectures कब होने वाला है. So आपका lecture Monday को होगा, Tuesday को होगा, Friday को होगा, and Sunday को होगा. Okay, and don't worry, I will take your whole syllabus, more than sufficient. Okay, don't worry. So today I would like to revise that to biochemistry of carbohydrate in very short, and then we'll see the remaining part. Okay, so we have already seen about the carbohydrates. What do you mean by carbohydrates? So that is the definition of carbohydrates. Carbohydrate का definition बहुत simple है. It is a polyhydroxyaldehydes or ketone. ठीक है, polyhydroxyaldehydes और ketone. पॉली मतलब क्या, बहुत सारे. हाइड्रोक्सी मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अल्डिहाइड और कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन क्यों बोलते हैं इसको? सपोज यू कैन सी ओवर हियर, तो ये स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज का, राइट. दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट. व्हाई इट इज नोन एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन? बेसिक थिंग. सो you see there are a lot of hydroxyl group. Okay, so here you can see lot of hydroxyl group. So polyhydroxy. Now why they are known as aldehyde? You can see aldehyde function. It is known as aldehyde functional group. So polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. Why polyhydroxyketone? So you can see polyhydroxy groups, and this is known as a ketone functional group in the fructose. So sugars, they will have either aldehyde functional group or ketone functional group, and they will have a lot of hydroxyl group. That's why they are known as a polyhydroxyaldehyde or ketone. Or carbohydrates are hydrolysis product of same. अगर उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, सपोज you have disaccharide, you have polysaccharide. So hydrolysis product of disaccharide, polysaccharide, obviously they are going to be monosaccharides. So monosaccharides, they are a sugar, right? So that's why carbohydrates are a polyhydroxyaldehyde or ketone or product obtained after the hydrolysis of same. Okay, so they will have a general formula, general empirical molecular formula. What is that? The formula important है, पूछा गया है. So empirical formula is nothing but the CH2O N. N means number of, okay, number. N means it is number. So for example, if only one carbon is there, C1, H2 and O1. Okay, or if number N is equal to 2, C2, H4, O2. If N is equal to 3, C3, H6, O. C is equal to N is equal to 4. अगर N 4 है, so C4 H8 O4. Yeah, if N is equal to 5, C5 H10 O5, like that. So that is the molecular formula for carbohydrates. Now if N is equal to N is less than 3, अगर number of atoms अगर 3 से कम है, so if N is less than 3, so they are known as hydrates of carbon. They are known as hydrates of carbon, and sugar is the term which is used when. Sugar कब बोलेंगे उसको? When the carbohydrate is soluble in the water and it is a sweet in taste. अगर sugar या फिर कोई carbohydrate sweet है और water soluble है, तो उसको अपन बोलेंगे sugars. So every carbohydrate cannot be called as a sugar, but every sugar belongs to carbohydrate only. So those carbohydrates which are water soluble and sweet in taste, they are known as the sugars. Okay, so they are classified into depending on the number of monomeric units. उसमें कितने sugar units हैं? They are classified into different classes like monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. So monosaccharide means only one sugar unit, disaccharide means 2 sugar units, oligosaccharide means 2 to 10 sugar units, and polysaccharide means many sugar units. We have seen already this. So glucose is very important carbohydrate. So glucose, you can see the structure of glucose. That is the structure of glucose. And glucose molecule, it consists of 6 carbon atoms. Glucose का structure क्या है? ये है. So it has a 6 carbon atoms. You have to remember, glucose has a 6 carbon atom, right? So it is known as a hexose sugar. Hexose क्या होता है वो मैं फिर से बोलूँगा. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So these are the 6 carbon of sugar. So it is known as a hexose sugar. So terminal carbon, carbon number 6. On that carbon you have CH2OH. Okay. That is known as a alcoholic terminus or terminal carbon containing alcohol. Okay, and first carbon atom on which there is a aldehyde group. So it is known as a functional group. So it is a aldehyde in case of glucose, and in case of fructose it is a ketone. In case of fructose it is a ketone.
So this is the structure of fructose. Fructose is also again same. It is also hexose. So 6 carbon. Right? We have seen this. There are two configuration of sugar, dextro and levo. As the glucose molecule or say for example sugar molecule में क्या होता है asymmetric carbon atom. So because of the asymmetric carbon atom, because of the chiral carbon atom, like for example this is chiral carbon, then this is chiral, and this one is a chiral carbon. There are 4 chiral carbons. You can see 2, 3, 4, 5. ये जो कार्बन्स है कार्बन नंबर 2, 4 and 5, so they are known as a asymmetric carbon atom, and because of that asymmetric carbon atom, so there are number of possible isomers. So depending on that, a sugar solution may either rotate a plane polarized light. Polarimeter में अगर आपने इनका rotation check किया, okay, so it will rotate the plane polarized light to the either right side or to the left side. Okay, now if sugar solution rotates a plane polarized light to the right side, it is known as a dextro or plus simply. डेक्स्ट्रो किसको बोलेंगे अगर शुगर का सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो राइट साइड को रोटेट करता है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, अगर वो लेफ्ट साइड को करता है तो उसको बोलेंगे लिवो. डेक्स्ट्रो इज आल्सो नोन एज अ प्लस एंड लिवो इज आल्सो नोन एज अ minus or I, minus or I. You have to remember. Now this configuration is also given in accordance with the glyceraldehyde. Glyceraldehyde क्या है? Glyceraldehyde is the simplest form of sugar. So only 3 carbon atom containing sugar. Glyceraldehyde, ठीक है? So glyceraldehyde का sugar 3 carbon का होता है. So simplest sugar. So most of the carbohydrates they will satisfy the formula known as a CnH2N, or you can say another CnH2nOn. सेम है दोनों भी. CH2O है ना, CH2O ब्रैकेट N जो पहले स्लाइड में देखा था, CH2O ब्रैकेट N वो फॉर्मूला, और ये CnH2nO2 सॉरी CnH2nOn सिमिलर फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला. तो देखो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई किया जाता है मोस्ट ऑफ द carbohydrates. Most of the carbohydrates will satisfy this formula CnH2nOn, but there are certain compounds, so they will not satisfy this formula. There are certain compounds they will not satisfy this formula. For example, acetic acid is there and lactic acid is there. So acetic acid, lactic acid, they are known as a non-carbohydrate compound. Acetic acid, lactic acid जो है they are not a carbohydrates, they will satisfy the formula. लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी ये क्या करते हैं फॉर्मूला को क्वालिफाई करते हैं. दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स बट दे विल satisfy the formula. Okay, they will satisfy the formula CnH2nOn. This formula is for carbohydrates. So you can see this. What is the molecular formula of acetic acid? Acetic acid का क्या होता है CH2 CH3 CH2 COOH, right? तो C2H4 O2, that is the formula. So you can see Cn, n मतलब 2 है, H2n मतलब H4 होगा, and ON मतलब O2 होगा. So it is satisfy the formula, but it is not a carbohydrate. In the similar way, your lactic acid also satisfies the formula, but it is not a carbohydrate. There are certain carbohydrates, for example, ramohexose and deoxyribose. ये क्या है carbohydrates है. Ramohexose, deoxyribose, both are the carbohydrates. Okay, but they will not satisfy the formula. You can see over here, deoxyribose will have this formula C5H1O4, C5H10O4, C5H10O4. अभी जनरल फार्मूला क्या बोलता है Cn, C जितना है उसके डबल हाइड्रोजन होना चाहिए और उतने ही ऑक्सीजन होना चाहिए, जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन होना चाहिए और डबल हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो C5 मतलब देयर आर 5 कार्बन एटम, H10 मतलब ट्वाइस ऑफ कार्बन, करेक्ट है, लेकिन O कितना है, O 4 है. सो आइडियली इट शुड हैव 5 ऑक्सीजन टू सैटिस्फाई द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Okay, so that's why deoxyribose and ramohexose, they are carbohydrates but they will not satisfy the formula. That's why you cannot call ramohexose and deoxyribose always carbohydrates. They cannot be called carbohydrates always. Obviously they are carbohydrates but they will not satisfy the formula. Now what are the functions of carbohydrate? We have seen most of the carbohydrate they are a source of energy. ये थोड़ा फास्ट ले रहा हो क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है. Source of energy, carbohydrate will give you 4
Okay, 4 calories per gram. Lipids will give you 6. Okay, lipids will give you 6 calories per gram. Okay, proteins will give you around 5 calories per gram, and alcohol will give you 12 calories per gram. सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स किसका होता है? अल्कोहल का. तो आप बोलेंगे सर अल्कोहल का एनर्जी सोर्स ज्यादा है तो कल से पीना चालू, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी अल्कोहल में है. तो आप ये बोल रहे हो, बुक में भी लिखा है सत्यनारायण में, तो कल से लेके पीना चालू करेंगे? नहीं, अल्कोहल इज नॉट अ फूड. ओके, so though alcohol will give you highest energy in terms of calories, but alcohol is not a food. Okay, alcohol is not a food. So alcohol will increase the energy, but it will also decrease your CNS. Okay, so it has a addiction property and all that. Though carbohydrate will give you only 4 calories per gram, then your lipids will give you 8 calories per gram, proteins will give you 5 calories per gram, and alcohol will give you 12 calories per gram. But alcohol is not a food. Okay, remember. Now carbohydrates, they are also precursor for the synthesis of lipids and amino acids. तो carbohydrates से lipids बनेगा, amino acid भी बनते हैं. ठीक है, so precursor for synthesis of lipids and amino acids, because intermediate in the carbohydrate metabolism like pyruvic acid, okay, pyruvate or phosphoenol pyruvate, then acetyl CoA or acetyl group. So they are the precursor for synthesis of lipid. For example, lipid or fats, they are synthesized from acetyl CoA. So many number of acetyl CoA, they are joined together to form a particular lipid. Okay, precursor for amino acids and lipids. They are a component of cell membrane. Carbohydrates are a component of cell membrane. They are present in the glycoprotein and glycolipids. ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं उसका ये कंपोनेंट्स है. दे आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ सेल, adhesion of cell and fertilization of cell. Carbohydrates are involved in the growth, adhesion and fertilization of cell. Okay, these are the functions. Now they are the structural component of plants. Plant का क्या है? Plants का structural component है. Say for example cellulose. Cellulose क्या है? Structural component of plant. And exoskeleton of few insects. कुछ insects में ये it will work as a exoskeleton. तो insect का पैर देखो आप, बहुत छोटा छोटा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होता है उसमें. So structural component of plant में स्टार्च होता है. So structural component of cellulose is पूरा के पूरा ट्रंक जो है पेड़ का, वो सेलुलोज का होता है. पूरा के पूरा जो ये श्रब जो होता है वो पूरा का पूरा सेलुलोज का होता है. मतलब प्लांट का पूरा लीफ से लेके पूरा पेड़ किससे बनता है? सेलुलोज. ओके, सेलुलोज. Then exoskeleton of some insect and also present in the cell wall of microbial or microorganism. So you might have seen the different microorganisms will have different cell walls. Some microorganism like gram-positive bacteria. Gram-positive bacteria में क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ज़्यादा होता है. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड. क्या होता है उसमें? म्यूकोपॉलीसेकेराइड. So structural component of bacteria, and they are also act as a storage form of energy. Storage form of energy कैसे? So glucose is the source of energy for every living cell. Glucose क्या है? सबसे बड़ा source है एनर्जी का. So glucose is not stored as it is in the body. Glucose as it is store नहीं होता है, क्योंकि अगर वो एनर्जी सोर्स है तो उसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेंगे. So there is another storage form of glucose known as a glycogen. Glycogen is a storage form of glucose. इसके ऊपर underline को. Glycogen is known as a storage form of glucose. Okay. Now we'll see the next very fast. So as I have told you, all sugars they are described in comparison with the simplest sugar. बाकी जितने भी शुगर है वो उनका कंपैरिजन. Okay, all the sugars, structure of all sugars, they are described in accordance with the two simplest sugar. Okay, these are the two simplest sugar. First one is known as a glyceraldehyde and second one is known as a dihydroxyacetone. Okay, glyceraldehyde. So glyceraldehyde is the simplest sugar. So it is a aldose sugar. Glyceraldehyde में aldehyde group होता है तो aldose sugar. Okay, you can see glyceraldehyde is a 3 carbon containing sugar. Carbon number 1, 2 and 3. Carbon number 1 is a functional carbon, that is aldehyde. Carbon number 2 in case of glyceraldehyde, carbon number 2 is a chiral compound. देखो CHO एक ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन दूसरा हो गया, CH2OH तीसरा हो गया and OH group 4. So it is a chiral center. Okay, और it is a asymmetric carbon. So that's why इसमें कितना asymmetric carbon है? एक ही. So it will have a 1:2 isomers, मतलब इसके 2 isomers होंगे. Okay, so उसका रूल होता है that will come in upcoming slide. So simplest carbohydrate is nothing but the glyceraldehyde.
glyceraldehyde. Okay. Now in the reference with the glyceraldehyde structure, all sugars are designated. Okay. Now if the alcohol group, of terminal carbon, and OH group of adjacent carbon to the terminal carbon, जो लास्ट वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है CH2OH, तो उसके नजदीक का कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 2 इन दिस केस. उसके ऊपर जो हाइड्रोजन ग्रुप है, if both hydroxyl group are on the same side, they are known as a dextro, D-glyceraldehyde. Okay, in this case it is a D-glyceraldehyde. Now you can see in this case it is on a opposite side. So it is known as a L-glyceraldehyde. Okay, so L-glyceraldehyde. So in the similar way, D series of sugars, ये क्या है, D series. D series मतलब क्या है? So terminal alcohol group and adjacent OH will be on the same side. So in case of glucose, it is a structure of glucose. 6 carbon atom जो है उसको क्या बोलेंगे, alcoholic carbon. So on the 6 carbon atom of glucose, you will have alcoholic group CH2OH. Now adjacent carbon to that alcoholic carbon, that is carbon number 5. So उसके ऊपर जो OH group है उसको देखो, this OH and this OH on a same side. That's why it is known as a D-glucose. So in the similar way, you can see in case of galactose, ये galactose का structure है. In case of galactose also, both alcoholic OH of terminal carbon and OH group of nearby carbon to the terminal carbon is also on same side. So D series. Again, same is true with this. It is structure of D minus. Same is true with this. It is structure of fructose. Same is true with this. It is structure of D fructose. Okay. Likewise then, अगर वो ग्रुप अपोजिट साइड पे होंगे तो उनको बोलेंगे L series. Okay. So L series, you can see L glucose. So this hydroxyl group and this terminal alcoholic group, they are on opposite side. So L glucose. In this case also, L galactose. In this case also, L mannose. In this case also, L fructose. So what is the difference between glucose and fructose? So glucose will have a aldehyde functional group, whereas your fructose will have a ketone functional group. देखो ग्लूकोज में क्या है, अल्डिहाइड है, ये कार्बन नंबर 1 में. फ्रुक्टोज में क्या है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर देखो, कीटोन ग्रुप है. कीटोन ग्रुप फ्रुक्टोज में है, अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में है. उसको अल्डोज कीटोज कैसे बोलते हैं अपन नेक्स्ट देखेंगे. नाउ मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या है, मोनोसैकेराइड्स मतलब मोनो मींस 1 and saccharide is the term for sugar. Mono means 1 and saccharides means sugar unit. Okay, am I audible you clearly? सब कुछ साउंड वगैरह आ रहा है ना, देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है बीच बीच में. So monosaccharides means what? Monosaccharides means, mono means 1. mono म्हणजे क्या, mono मतलब क्या, 1. Okay, mono means 1, saccharides मतलब sugar units. Mono is the term for 1 and saccharide is the term for sugar unit. So monosaccharide means these are the sugar which have a single sugar unit, unit of carbohydrate. So monosaccharides, right? So monosaccharides, and if two sugars are there, they are joined together by a glycosidic bond. अगर दो शुगर है, if two monosaccharide units they are joined together by single unit, they are joined together by a glycosidic bond, that is known as disaccharide. तो पहले monosaccharide के बारे में देख लेते हैं. So monosaccharides, they are having single unit of carbohydrate and most of them are sweet in taste. ये क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठा होता है. So they are sweet in taste. So remember monosaccharides, they will have a single unit of carbohydrate and they are sweet in taste. Okay. So depending on the number of carbons, कितने कार्बन है उसके ऊपर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. So depending upon the number of carbon atom present in the monosaccharide, they are classified into different types. Okay. And also depending upon the functional group in the monosaccharide is also classified into 2 types. So depending on the functional group, they are classified into first aldoges. Aldoges means what? So those sugar or those monosaccharides which will have aldehyde group in the structure. For example, इसमें दिया है glyceraldehyde, glucose and ribose. Okay. Aldose means what? Sugar or monosaccharide having aldehyde functional group. Aldose. So aldehyde, ald for aldo, ALD. So ALD of aldehyde is taken as it is. Aldose means aldehyde functional group. For example, कितने sugar है, glyceraldehyde is a aldehyde sugar. Okay, aldose sugar. Glucose is a aldose sugar. Ribose is a aldose sugar. So glucose, ribose and glyceraldehyde, all these are aldose sugar. Aldose sugar. Okay. Now next one is a ketose sugar. So what do you mean by ketose sugar? So if a monosaccharide has a
कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक है, अल्डोज में क्या है, अल्डिहाइड है, सिंपल है कि नहीं, देखो कीटोज में क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोसैकेराइड दे आर नोन एज कीटोजेस, अल्डिहाइड कंटेनिंग functional group they are known as aldoges, okay, aldose sugar और ketose sugar, aldose sugar किसको बोलेंगे, जिसमें aldehyde होगा ऐसे sugar को aldose बोलेंगे, ketose sugar किसको बोलेंगे, जिसमें ketone होगा उसको ketose sugar बोलेंगे. So examples of aldose sugar, glyceraldehyde, then glucose and ribose, and in the similar way examples of your ketose sugar, dihydroxyacetone, then fructose and ribulose, ठीक है, dihydroxyacetone, fructose and ribulose, they are the ketose sugar, okay. So next we'll see classification of your monosaccharide depending upon the number of carbon atoms, ठीक है. So again यहाँ पे glyceraldehyde 3-phosphate is nothing, glyceraldehyde is nothing but the 3 carbon containing sugar, it is a 3 carbon containing sugar. So इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, glucose is having 6 carbon, glucose is having 6 carbon, and this ribose is having 5 carbons, ribose is having 5 carbon, right. So glyceraldehyde is having 3 carbon, glucose is having 6 carbon, ribose is having 5 carbon, all these are the monosaccharide, they are single unit of sugar but they are having different carbons. So depending upon that how many number of carbons are present in the monosaccharide, so they are classified into different type. For example, first one is a trioses. Trioses मतलब क्या है, trioses मतलब tri is the term for 3, अपन बोलते हैं ना mono 1, bi mono 1, di और bi, di और bi for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, hexa for 6, hepta for 7, octa for 8, nona for 9, deca for 10, like that, okay. So trioses means what, 3 carbon containing sugar. So glyceraldehyde 3 for glyceraldehyde phosphate or simply glyceraldehyde and dihydroxyacetone, they are the 3 carbon containing sugar, 3 carbon containing sugar. मैंने बोला dihydroxyacetone is also 3 carbon containing, तो ये 3 carbon containing sugar है both, right. And glucose is 6, so likewise that fructose is also 6, this ribose is 5, ribulose is also 5 carbon atom containing sugar. So trioses means 3 carbon containing sugar, okay. So these glyceraldehyde and dihydroxyacetone they does not occurs in a nature, ये nature में नहीं पाया जाता है ये sugar, ये कहाँ पे पाया जाता है, it is a intermediate in the metabolic pathway known as a glycolysis, glycolysis के intermediate है ये, as it is नहीं पाया जाता. Now tetroges, tetroges means what, tetros as I told you, tri means 3, tetro means 4, so these are the sugars containing 4 carbon atom, इसमें 4 carbon atom है, कौन सा है example, erythrose, erythrose is a tetrose sugar, okay, erythrose, okay, is a tetrose sugar, so it is intermediate in the again metabolism में ये भी है intermediate, it is not found in the nature. Now pentose sugar, so what do you mean by pentose, so obviously pentose means 5 carbon atom, तो इसमें 5 कार्बन एटम होंगे पेंटोज शुगर, राइट. सो एग्जांपल इज नथिंग बट राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, जैसे ये नाम आपके सामने आता है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, तो आपके माइंड में एक आता होगा कि यार एक कई तो भी टर्म्स दिखा है, देखो डीएनए आरएनए, ठीक है, डीएनए में क्या है, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट. So ribose and deoxyribose sugars they are found in the nucleic acids, nucleic acids. So pentose sugar, क्वेश्चन आता है देखो, so deoxyribose sugar found in the DNA is the following type, और क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, तो आपको क्लियर है यहाँ पे ही पेंटोजेस करना है. ट्रायोजेस मतलब ग्लिसरॉल्डेट एंड डाइहाइड्रोक्सेस्टोन, टेट्रोजेस मतलब उसका एक ही एग्जांपल है इरिथ्रोज, पेंटोजेस मतलब क्या, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ओके, राइट. नाउ अगेन एग्जांपल ऑफ पेंटोज, xylose, xylose, okay. So deoxyribose sugar is found in the DNA and ribose sugar is found in the RNA. RNA मतलब क्या, ribonucleic acid, and DNA मतलब क्या, deoxyribonucleic acid. So that's why they have given the name ribose, ribonucleic acid for ribose, deoxyribonucleic acid for deoxyribose, okay. Now xylose is the again a pentose sugar found in the glycoprotein and gums. जो आपका गम होता है, गम, गम मतलब ये खुशी वाला गम वाला गम नहीं, ये प्लांट में से जो आता है गम, okay, like gum acacia, gum tragacanth, gum gatti, gaur gum, like that, okay. So in that gum xylose is found, xylose, it is found in the glycoproteins and gum. Then again next
pentose sugar is a xylulose, xylose and xylulose. So there is just difference. Xylose का ही reduction अगर करेंगे तो xylulose बनेगा, but xylulose is different. Xylulose is an intermediate in the uronic acid pathway. यूरोनिक एसिड पाथवे लिग्जोज सुगर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसको फिर से अलग से अंडरलाइन, लाइग्जोज और लिग्जोज सुगर। सो इट इज द पेंटोज शुगर। लिग्जोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर। इट इज फाउंड इन द हार्ट मसल। आपका जो दिल होता है ना, बार बार धड़कता है किसी के लिए भी, तो उसमें क्या होता है, लाइग्जोज शुगर। लाइग्जोज शुगर इज फाउंड इन द हार्ट मसल इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट। वहाँ पे एक पिगमेंट होता है कलर में, so known as a lexoplavin. So lexoplavin is the pigment found in the heart, and in that it is a lactose sugar, which is a pentose sugar. Okay, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में, याद नहीं आ रहा मुझे कौन से एग्जाम में आया था। So likewise that hexose, hexose means 6 carbon atom containing sugar. So hexose एग्जाम्पल क्या है, देखो ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन। Example is glucose. Example is glucose, then fructose, then galactose, then mannose. These are the examples. Glucose, fructose, galactose, mannose, they are known as a hexose. क्यों बोलते हैं, उसमें 6 कार्बन एटम होता है, so hexose. So glucose is known as a sugar fuel of life. Glucose is known as a sugar fuel of life. Glucose is known as sugar fuel of life. ठीक है, because you need your body, your cells, your every individual cells needs a energy, and for the energy glucose is oxidized. तो उसका ऑक्सीडेशन होके आपको एनर्जी मिलता है, right, in the form of ATP. So that's why glucose is known as a sugar fuel of life. Fructose is known as a fruit sugar. फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, क्योंकि देखो फ्रूट, fructose is known as a fruit sugar because fructose is found in the fruits. Okay, fructose is known as a fruit sugar, and also fructose is found in the honey. जो मधु होता है, हनी बीज जो बनती है, so in that fructose is there, and also free fructose is found in the seminal fluid. So in the seminal fluid your sperms will not utilize glucose for the energy. बाकी सेल जो होते हैं कि ग्लूकोज को यूटिलाइज कर देते हैं एनर्जी के लिए, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एनर्जी मिलता है उनको। कुछ सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज नहीं है तो फिर लिपिड्स को, लिपिड मतलब फैट, सो फैट को बुलाते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एसिड को बनाते हैं बाद में एनर्जी। ठीक है, so some cell will utilize glucose, some cell will utilize glucose as well as lipids as well as amino acids for the energy, and there are certain cells which only utilize the fructose. So in seminal fluids or sperms they utilize the fructose for energy. तो sperms में क्या है, sperm को एनर्जी देने वाला कौन है, fructose है, ग्लूकोज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना का। ग्लूकोज इज द एनर्जी सोर्स फॉर ऑल टिश्यू, obviously no doubt, but for the nourishment of sperm and for the energy of sperm fructose is there. Okay, then galactose is found in the milk in the form of lactose. galactose क्या है, lactose क्या है, it is a monosaccharide. Okay, galactose क्या है, monosaccharide, lactose क्या है, disaccharide. So galactose is a component of lactose which is found in the milk, that's why it is known as a milk sugar. And then last one is mannose. Okay, so these are known as a hexoses. They will have a 6 carbon atom in their structure, right? Next one is nothing but the okay, individual monosaccharides, those जो trioses होते हैं, so we have seen about the trioses, glycerylate and dihydroxyacetone. These are the trioses. They are the intermediate in the glycolysis. They are not found in the nature as it is, and they are the precursor for synthesis of glycerol. Glycerol का synthesis करने के लिए ये precursor है, starting compound है. Okay? Then tetroges, in that you have erythrose. Okay, so erythrose 4-phosphate, it is an intermediate in the HMP shunt. HMP मतलब क्या, hexose monophosphate shunt. It is also known as a pentose phosphate pathway. It is also known as a shunt pathway. ठीक है, so synonyms याद रखो, आप लिख लो, pentose phosphate pathway और hexose monophosphate pathway, और it is known as a alternative oxidative pathway for glycolysis. उसको और एक नाम है, at that time I will explain. Okay, then pentoses मतलब 5 carbon. So D-ribose and deoxyribose both are the pentose. They are found in the DNA, RNA. Also they are found in the these nucleotides, flavin adenine dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide. So these are also two
These are also two coenzymes in which there is a presence of ribose. Okay, deoxyribose is a constituent of DNA and ribose is a constituent of RNA. Okay, and D-ribulose and D-xylulose, they are the phosphate ester derivative of ketopentose. D-ribulose and D-xylulose, they are the ketopentose. Ribose and deoxyribose के aldopentose. So they are intermediate in the HM patient. Then D-xylulose is also metabolite of D-glucouric acid. जो glucouric acid होता है जब oxidation होता है glucose का, we'll see, we have already seen, but again we'll see. So oxidation product of glucose is a D-glucouric acid. Okay, and glucouric acid का metabolite होता है D-xylulose. And if there is a inborn error or if there is a genetic defect, if there is a problem in the metabolism of glucouric acid, so D-xylulose, which is a metabolite of glucouric acid, is excreted in the urine and the condition is known as a pentosuria. Okay, क्या होता है कि xylulose जो है ना वो ग्लूकोयूरिक एसिड का मेटाबोलाइट होता है बॉडी में, और अगर ग्लूकोयूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट है आपकी बॉडी में, क्या होगा, xylulose जो है वो यूरिन में आ जाएगा एंड xylulose इज अ पेंटोज, तो उसको बोलते हैं पेंटोज यूरिया, उसको बोलते हैं पेंटोज यूरिया. सो एबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्लूकोयूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म रिजल्ट्स इन द पेंटोज यूरिया. क्वेश्चन आ सकता है. L-fucose is also pentose sugar found in the glycoprotein. Next we'll see exo sugar, D-glucose. पहला आता है exo मतलब क्या 6 कार्बन आइटम containing sugar. Pentose मतलब 5. पहला आता है आपका D-glucose. So glucose is also known as remember, it is known as a sugar fuel of life, and most of the sugars they are dextrorotary. That's why D-glucose. Okay? D-glucose मतलब glucose is a dextrorotary and dextrorotary glucose is known as a dextrose. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. What is dextrose? D-glucose is also known as dextrose. D-glucose is nothing but the dextrose, and it is also known as a grape sugar. D-glucose is also known as a dextrose, grape sugar, and it is a sugar fuel of life. It is a cheap physiological sugar in all tissues. ये sugar क्या है? ये only sugar as a source of energy. Glucose is utilized in the tissues and cells for energy. Only source of energy for brain and RBC. RBC जो है, RBC को बोलते हैं red blood cells, और उसको another name. What is another name of RBC? Anybody? RBCs are also known as red blood cells को क्या बोलते हैं? Erythrocytes. Okay, so erythrocytes are nothing but the RBC. So RBC is known as a erythrocytes, okay, or red blood cells. Okay? So in the RBC in the brain and RBC they are totally dependent on a glucose for energy. अगर ग्लूकोज नहीं है तो ब्रेन डेड हो जाएगा. ठीक है, तो आपके देखो आप मोस्टली ये लड़कियों में होता है. ठीक है, लेडीज गर्ल्स में ज़्यादा होता है. गर्ल्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा खाना नहीं खाती क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, या फिर बाकी जो भी कॉन्शियस है वो कॉन्शियस रहती है. तो क्या होता है कि कभी कभी आता, अभी अभी आई डोंट नो अभी होता है या नहीं है, कि पहले ज़माने में हम जब पढ़ते थे उस टाइम पे ओपन स्कूल होते थे, वहाँ पे पूरा राष्ट्रगान होता था, वहाँ पे पूरा फिजिकल ट्रेनिंग होता था, मतलब पीटी एक्सरसाइज वगैरह. सुबह सुबह स्कूल चालू होने के बाद में पहला राष्ट्रगान होगा और पीटी एक्सरसाइज होगा, पीटी का एक्सरसाइज. ठीक है, 1 आवर, और उसके बाद में अपने लेक्चर चालू होंगे. पीटी एक्सरसाइज में क्या होता था, बहुत सारी लड़कियां चक्कर आके गिरी थी, बहुत सारी लड़कियां चक्कर आके नीचे गिरी थी. क्यों? बिकॉज एक तो क्या होता था, मॉर्निंग में स्कूल होते थे तो खाना खा के नहीं आती थी, तो उनके बॉडी में ग्लूकोज नहीं रहता, वो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता. तो ग्लूकोज लेवल आपका बॉडी का कम हो गया तो आपको चक्कर आना चालू हो जाएगा. सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल, your brain will not tolerate that, so brain will you will get easily dropped because of that hypoglycemia. So decrease in the blood sugar level known as a hypoglycemia. Okay, increase the blood sugar level known as a hyperglycemia. Okay? नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है ब्लड का, तो वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेट. इफ यू आर फास्टिंग, अगर कुछ खाया नहीं आपने तो 60 to 120 मिलीग्राम पर डेसिलिटर. अगर आपने खाया है, खाने के बाद में अलग लेवल होता है. ओके, सो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया, ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिया. सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ड्यूरिंग द पीटी एक्सरसाइजेस दे यूज्ड टू गेट वर्टिगो. वर्टिगो मीन्स चक्कर, okay? Because of the hypoglycemia. Okay? So remember, brain and RBC they are totally dependent on the
glucose for the energy. Now glucose is also stored in the liver and muscle. ग्लूकोज तो बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो आप कैसे बोल रहे हो? ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल्स एंड लिवर. लिवर में, मसल्स में ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा और वो स्टोर होगा. ग्लाइकोजन क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज. तो ना मोनोसेकेराइड देख रहे हैं आप, तो ग्लूकोज के ऐसे बहुत सारे यूनिट ज्वाइन होंगे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, तो क्या बनेगा? ग्लूकोजन. ग्लाइकोजन. So glycogen is nothing but the polymer of glucose and storage form of glucose. Okay, and also glucose is also part of disaccharide. जैसे fructose, जैसे सुक्रोज. सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ठीक है. माल्टोज, माल्टोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. लैक्टोज, लैक्टोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. So glucose is also a part of disaccharide, and glucose is dextrorotatory, and it also shows the mutar rotation. Mutar rotation क्या होता है? We are already seen, but फिर से अपन देखने वाले हैं. Next we'll see. Next is the D galactose. Galactose. D galactose. Galactose क्या है? It is a monosaccharide. Galactose is again a monosaccharide known as a hexose. क्या है hexose? D galactose is found in the milk. Okay, as a component of galactolipids and glycoproteins also. D galactose is also a dextrorotatory, and it will also show mutar rotation. Okay, it is a C4 epimer of glucose. C4 epimer of glucose. Okay, glucose and galactose they are C4 epimers of each other. क्यों? ग्लूकोज के और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 4 के ऊपर ही अरेंजमेंट अलग है, इसलिए C4 epimers. We already seen that, but I will also explain again. It is found in the plants and animal in the bound form. It is not available in the free form. ये फ्री गैलेक्टोज नहीं मिलेगा आपको. गैलेक्टोज ऑलवेज फाउंड इन द बाउंड फॉर्म. मतलब क्या है कि लैक्टोज में गैलेक्टोज है, तो लैक्टोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ में लैक्टोज में है, अकेला नहीं है. इट इज नॉट इन द फ्री फॉर्म, इट इज फाउंड इन द बाउंड फॉर्म. Again, oxidation of galactose with nitric acid. Oxidation of galactose with the nitric acid will give you one acid known as a mucic acid. Oxidation of this galactose with the nitric acid will give you mucic acid, which is a dicarboxylic acid. मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, डबल COOH. Important for the identification of galactose. तो ये जो रिएक्शन है, reactions of galactose with the nitric acid, which will give you dicarboxylic acid, which is very important for the identification of galactose. इसके बेसिस पे ही आइडेंटिफिकेशन होता है उसका. Now third sugar, that is a D fructose. You know that fructose is known as a fruit sugar. It also, because it occurs in the fruits, also found in the free form in the honey. Honey में सबसे ज़्यादा fructose होता है, and also found in the sperms, because in the sperm it is a source of energy for sperm. होता क्या है देखो, in your testis, मतलब जो मेल्स होता है, मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, इन द टेस्टिस फ्रुक्टोज तो बॉडी में होता नहीं है. ओके, फ्रुक्टोज इज नॉट फाउंड इन द बॉडी. ओके, बट इट इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. फ्रुक्टोज इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, इज इज मेड इन द बॉडी फ्रॉम द ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज में. कहाँ पे होता है? ये होता है आपका लेड टेस्टिस में, एंड फ्रुक्टोज इज सिंथेसाइज्ड इन द टेस्टिस फ्रॉम ग्लूकोज, and that fructose will serve as an energy source for sperms. याद रखो, fructose sperms में होता है, आपका हनी में होता है. fructose क्या है? fructose is a ketohexose. so glucose was a aldohexose. glucose में aldehyde फंक्शन ग्रुप है, तो इसको aldohexose बोलिए. ग्लूकोज में aldehyde फंक्शन है, 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम aldehyde फंक्शन ग्रुप aldohexose. okay, so 6 कार्बन एटम but ketone फंक्शन ग्रुप, so ketohexose. फ्रुक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज. क्यों बोलते हैं कीटोहेक्सोज को? क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एंड 6 कार्बन एटम, सो कीटोहेक्सोज. इट इज अ लिवोरोटेटरी. क्या है ये? लिवोरोटेटरी. मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर घुमाएगा. इट इज अ लिवोरोटेटरी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लिवेलोज. इट इज नोन एज अ लिवेलोज. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ चुका है. फ्रुक्टोज इज नोन एज अ लिवेलोज. क्या बोलते हैं फ्रुक्टोज को? लिवेलोज. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, पेपर्स देखो आप प्रीवियस के. सो फ्रुक्टोज इज नोन एज अ लिवेलोज बिकॉज ऑफ द लिवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज इज अ लिवो रोटेटरी शुगर, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज नोन एज अ लिवेलोज. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, यू हैव टू नोट डाउन. ओके, एंड फ्रुक्टोज आल्सो शोज म्यूटर रोटेशन. म्यूटर रोटेशन क्या होता है? विल सी इन अपकमिंग स्लाइड.
So it will also show mutant rotation. Fructose will also show mutant rotation, and fructose is more sweet than glucose. क्या होता है इसमें कंफ्यूज होता है कि ग्लूकोज स्वीट है या फ्रुक्टोज स्वीट है, ग्लूकोज स्वीट है या फिर सुक्रोज स्वीट है, कौन स्वीट है? ठीक है, स्वीट कौन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज. सो फ्रुक्टोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज. तो सबसे ज्यादा मतलब नेचुरली ऑकरिंग शुगर में, मतलब अपने ह्यूमन बॉडी में, एनिमल शुगर में, क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग शुगर तो प्लांट में भी आता है, प्लांट में ये इससे भी ज़्यादा स्वीट आता है. सो इफ यू कंपेयर ए ह्यूमन शुगर, तो आपने जो नॉर्मल शुगर थे, शुगर लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैंगोज वगैरह, सो अमॉन्ग्स दोज सुक्रोज इज मोस्ट स्वीट, सुक्रोज इज मोस्ट स्वीट, बट फ्रुक्टोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं है स्वीट. ओके, fructose occurs as a constituent of sucrose and it is also present in the polysaccharide. also present in the polysaccharide. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, मैं एक्सप्लेन करूँ. पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज इज नोन एज इनोलिन. क्या है? पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज इज नोन एज इनोलिन. ठीक है, जैसे पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट द ग्लाइकोजन. ग्लूकोज को पॉलीसैकेराइड कौन है? ग्लाइकोजन. यहाँ पे याद रखो, ग्लाइकोजन. तो स्टोरेज फॉर्म भी है. तो ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड होता है ग्लाइकोजन एंड लाइकवाइज फ्रुक्टोज का पॉलीसैकेराइड होता है आपका इनोलिन. इनोलिन. ओके, नाउ दिस इज नॉट एब्सॉर्ब इन द बॉडी. ये इनोलिन जो है ये बॉडी में रुकता नहीं. आप अगर इसका इंजेक्शन देंगे तो ये किडनी से फिल्टर होके बाहर जाता है. सो इनोलिन इज एक्टिवली फिल्टर्ड इन द किडनी, इन द नेफ्रॉन्स. दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको याद रखना है. सो इनोलिन, as it is easily filtered through a nephron, it is used to measure the glomerular filtration rate. So inulin, which is a polysaccharide of fructose, used to measure the GFR, glomerular filtration rate. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है. इनोलिन इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज. रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको बाद में भूल जाते हो. इनोलिन इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज which is used to measure the glomerular filtration rate. तो आप बोलेंगे सर हमने दूसरे में तो, एक क्वेश्चन में तो इनुलिन नहीं है, दूसरा कुछ कंपाउंड है. सो ऑब्वियसली इनुलिन इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द जीएफआर. अनदर कंपाउंड इज देयर नोन एज क्रिएटिनिन. क्रिएटिनिन इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. आपको दो कंपाउंड याद रखना है, इनुलिन एंड क्रिएटिनिन. बोथ आर यूज्ड टू मेजर द जीएफआर, बट इनुलिन इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ डी फ्रुक्टोज. इट्स अ पॉलीसैकेराइड ऑफ डी फ्रुक्टोज. द पॉलीमर और पॉलीसैकेराइड सेम. यू हैव टू रिमेंबर. Glomerular filtration rate क्या होता है? GFR. So when we will see the excretory system or urinary system, at that time I will explain you regarding this again. But GFR मतलब क्या है? So amount of blood which is being filtered in the glomerulus per unit time. Amount of blood which is filtered in the nephron per unit time, that is known as a GFR, glomerular filtration rate. जो है ना, नेफ्रॉन वगैरह पढ़ा होगा आपने, किडनी नेफ्रॉन वगैरह in the 12th. Okay, so okay, ml, amount of blood or ml of blood that is filtered by glomerulus or nephron per unit time. एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से. अगर आपको किडनी में कोई दिक्कत है, किडनी आपका कम काम कर रहा है, सो जीएफआर विल बी डिक्रीज्ड, जीएफआर विल बी लेस देन नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल जीएफआर का भी वैल्यू रहता है, इट इज अराउंड 140 ml पर मिनट. उसका भी याद रखना है आपको. वो फिर से आएगा आपको, डोंट वरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट वन इज अ डी मैनोज. डी मैनोज इज नॉट ओके. डी मैनोज इज आल्सो एक्सो शुगर. इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, it is found in the free form in the nature. Sorry, it does not found in the free form in the nature. Okay, it is available or it is found in the polysaccharide. For example, in ivory nut. एक फ्रूट होता है ivory nut, उसमें ये डी मैनोज पाया जाता है. एंड अगेन इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन द बॉडी. बॉडी में जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें भी ये डी मैनोज पाया जाता है. नेक्स्ट शुगर है, ये हो गए एक्सो शुगर. दिस वाज द एक्सोस शुगर. ये सब है एक्सोस. ठीक है, याद रखना है आपको. डी ग्लूकोज इज एक्सो शुगर, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज. So all these are the hexo sugar. Now next one is nothing but the heptose. याद है बस, यहाँ क्या लिखा है? Pseudoheptulose. Pseudoheptulose. It is a ketoheptose. Heptose मतलब 7 carbon atom. So it is a ketone functional group containing sugar having 7 carbon atom
found in the plants and important intermediate in the HM patient. HM patient में add exos monophosphate shunt और pentose phosphate pathway इसमें ये क्या है इंटरमीडिएट है इंपॉर्टेंट याद रखो और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर्स इन रेफरेंस टू ग्लूकोज पहला होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स फर्स्ट a carbon if a carbon is attached to a four different groups it is known as a asymmetric carbon atom कार्बन है ना अगर एक कार्बन है if this carbon is attached to a four different group okay x y then z and then p so if carbon is attached to a four different group that is known as an asymmetric carbon atom or chiral carbon atom sugars have a different number of chiral carbons okay and depending on that because of the presence of chiral carbon or asymmetric carbon atom they will have different isomers sugars में क्या है chiral carbon होता है asymmetric carbon होता है और उसकी वजह से उनमें isomers होते हैं isomers कितने isomers है कैसे कैलकुलेट करेंगे आप so there is a one rule known as a Van't Hoff rule कौन सा रूल है Van't Hoff rule ठीक है Van't Hoff rule of N तो ये रूल ना आपको कॉलेज में पढ़ाया ये रूल ना किसी क्लासेस वालों को मालूम है बातें करते रहते कुछ नहीं ये रूल कौन से बुक में है वो भी उनको मालूम नहीं वेंट ऑफ रूल उनको ये मालूम है कि देयर इज वन फार्मूला 2 raised to n बट वो रूल क्या है किसका रूल है उनका है या किनका है इट इज अ वेंट ऑफ रूल सो वेंट ऑफ रूल ऑफ n मींस व्हाट सो इट इज अ रूल टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड ओके एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ asymmetric carbon so n क्या है what is n in this form in this rule n is nothing but the number of asymmetric carbon atom okay and what is the formula this is the formula 2 raised to n so Van't Hoff formula आपको क्वेश्चन आ सकता है Van't Hoff formula and similarly एक ऐसा है Van't Hoff नाम और आपको Suetix में आएगा okay in the industrial pharmacy during the pre-formulation Van't Hoff's plot that is a Van't Hoff's plot is different thing Van't Hoff rule is a different thing Van't Hoff rule is a rule to predict the number of isomers of compound if number of asymmetric carbon atoms are known and Van't Hoff's plot is different thing Van't Hoff's plot is the plot of molar solubility versus temperature वो अलग बात है when we'll see industrial pharmacy at that time I will explain now for example glucose has a 4 asymmetric carbon atoms glucose में कितने हैं 4 asymmetric carbon atoms that's why it has a 16 isomer कितने हैं 16 isomer इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT में हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर पॉसिबल कितना पॉसिबल है ग्लूकोज का आइसोमर्स 16 isomers right because glucose has a 4 different asymmetric carbon atoms and because of that देखो कितना है ग्लूकोज में 4 है 4 asymmetric carbon atom so 2 raised to n 2 raised to n मतलब 2 raised to 4 n मतलब क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 raised to 4 कितना होगा आपका 16 मतलब 2 raised to 6 मतलब 2 raised to 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 so 4 times 2 कितना होगा 16 so glucose has a 16 isomers write down because it has a 4 asymmetric carbon okay now stereoisomers two compounds having same molecular formula but different arrangement of atom in a space or special configuration and based on that D and L series of glucose and other sugars are possible I have discussed this in a previous slide. So arrangement of hydroxyl and hydrogen, okay, hydrogen and hydroxyl group. Arrangement of hydrogen and hydroxyl group around the carbon atom. Around the carbon atom. कौन सा carbon? Adjacent to the terminal alcohol carbon. Adjacent to the terminal alcohol carbon. ऐसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपका. CHO, then HOH, then OHH, HOH. Okay then again HOH and last में यहाँ पर CH2OH CH2OH यहाँ पे लास्ट वाला कार्बन होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब ये अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन एंड इसके नजदीक का जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 5 सो अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 5 और नियरेस्ट कार्बन टू द टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल सो इफ OH group of carbon number 5 is on the same side as that of the carbon number 6 that is known as a D series. If it is on the opposite side, known as a L series. We have already seen this first few slides. So D series मतलब क्या है? D series OH of C5 is on a right side
that is D series, and L series means OH of C5 is on a left side. Most of the sugars जो होते हैं they are a D series. Most of the sugars in the nature they are a dextrose. Okay, most of the sugars in the nature they are a D, and therefore metabolizing enzyme for the same. Sugar को metabolize करने वाले enzyme भी क्या है? D configuration enzyme. Most of the sugars will have D configuration, and that's why respective metabolizing enzymes will also have D sugar, D configuration. Now optical activity, because of the asymmetric carbon atom, when a beam of plane polarized light, अगर आप शुगर का सॉल्यूशन बनाइए और आपके वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा आपके लैब में, नोन एज अ पोलरीमीटर, एक ऐसा लंबा बहुत लंबा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है एज अ पोलरीमीटर. तो अगर उसमें आपने शुगर का सॉल्यूशन चेक किया, so it will rotate the plane polarized light. क्यों? Because it has a asymmetric carbon atom. Either it will rotate to a right side or left side, depending on that D and L series. Okay, so it will rotate the plane polarized light, and therefore it will have optical activity. They either rotates the plane polarized light to the right side, that is dextro, or right side पर rotate करता है dextro denoted by D or plus, और लेफ्ट साइड को करता है रोटेट तो लियो और माइनस और I, and according to that optical isomers or enantiomorphs are possible. Now racemic mixture किसको बोलेंगे? So if two enantiomorphs or if two isomers, if they are present in the equal amount in the mixture, equal amount of D and L isomer in the mixture, it is known as the racemic mixture. Racemic mixture is optically inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. बट आप बोलेंगे सर इसमें जो कंपोनेंट है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्यों नहीं है? देयर इज अ रीजन. ओके, सो इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल आइसोमर, दोनों आइसोमर जो अलग अलग है वो इक्वल अमाउंट में है, तो इक्वल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ए का और बी का कैंसिल होगा. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवर विल बी कैंसल्ड, म्यूचुअली कैंसल्ड, and that's why racemic mixture will not have optical activity. Each isomer will be, okay, optical activities of each isomer will be cancelled. Separation of optically active isomer from the mixture. अभी ये racemic mixture जो है उसमें दो कंपोनेंट है इक्वल, आपको एक अलग चाहिए, आपको निकलना है, सेपरेट करना है. तो सेपरेशन टेक्निक ऑफ इंडिविजुअल आइसोमर फ्रॉम द racemic mixture is known as a resolution, is known as a resolution of mixture, is known as a resolution of racemic mixture. There is a separate topic on this in the chemistry, resolution of racemic mixture of racemic mixture. So resolution में बहुत सारा टाइप है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ठीक है, उसमें बायोलॉजिकल मेथड है, उसमें यूजिंग लैक्टिक एसिड और सिलेक्टिव पाश्चर का भी है, उसमें बहुत सारा है उसमें, ठीक है, उसमें एक पूरा टॉपिक है resolution of racemic mixture. और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स. शुगर्स का स्ट्रक्चर आपने देखा है लीनियर, वी हैव सीन द लीनियर स्ट्रक्चर. नाउ इफ C5 of alcohol reacts with the aldehyde or ketone of the sugar, cyclization of structure will take place. Okay, I will show you. You can see over here, this is the structure of glucose. यहाँ पे CHO ग्रुप होता है, aldehyde ग्रुप, ठीक है, बट when OH group of C5, ये कार्बन नंबर 5 है, OH group of C5, when OH group of C5 reacts with the aldehyde group of glucose, there is a cyclic structure formation of glucose. Okay? That is known as a cyclization of glucose. Okay, that is known as a cyclization of glucose. You can see over here. बाद में please लिखूँगा. Okay? So when C5 there is an alcoholic group of C5 OH group reacts with the functional group, that is aldehyde or ketone. There is a cyclization of structure. Now, open chain D glucose is a aldehydo D glucose. अगर ओपन चेन है विदाउट सर्कुलेशन वो उसको बोलेंगे aldehydo D glucose, उसमें aldehyde फंक्शनल होगा. बट व्हेन aldehyde condenses with the OH of C5, जो लास्ट वाला कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अल्कोहलिक ग्रुप उसके साथ में कंडेंस होता है. ओके, so two different cyclic forms of glucose are formed. There is alpha D glucose and beta D glucose. कैसे होता है फिर से मैं एक्सप्लेन. ओके, you can see when a alcohol group of carbon number 5, जैसे है ना कार्बन नंबर 5, सॉरी कार्बन नंबर 5, तो ये जो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जैसे यहाँ पे देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. ओके, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. व्हेन दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा C5 कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप
when this reacts with the aldehyde group, so there is a cyclization, cyclic structure बनेगा, ऐसा ऐसा cyclic structure. And once there is cyclization, so जो पहला कार्बन आइटम था aldehyde containing कार्बन आइटम chiral नहीं था, it was a symmetric कार्बन. ये देखो यहाँ पे symmetric CHO है ना, यहाँ मतलब CHO, C डबल बॉन्ड OH है ना, तो ये chiral नहीं था क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो सेम ग्रुप हो गया. So it was not a chiral carbon, it was not asymmetric. Now after cyclization this carbon becomes asymmetric. जो नॉर्मली ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर में जो कार्बन नंबर 1 है एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप, वो कार्बन एसिमेट्रिक नहीं था, अभी साइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया तो एसिमेट्रिक बन गया, ए कायरल, ओके कायरल बन गया. सो बिकॉज ऑफ द cyclization this carbon will become asymmetric. And now depending on that there is a different arrangement, depending on that arrangement of hydrogen and hydroxyl group on carbon number 1. Now after cyclization this carbon becomes asymmetric. ठीक है, asymmetric क्या बोलते हैं उसको, asymmetric. अभी ये asymmetric बना है, पहले नहीं था, पहले नहीं था, अभी asymmetric बना है, तो इसको बोलेंगे A for anomer, A for anomeric carbon. Before cyclization linear structure was, okay, जैसे ये यहाँ पे और एक बार बोलता हूँ क्योंकि कंसेप्ट समझना चाहिए, क्वेश्चन आ चुके हैं इसके. ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. बाद में ये भी मतलब क्या होता है बाद में बोलूँगा. इज अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन दैट ऑन फर्स्ट कार्बन आइटम इट इज CHO, मतलब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे H लिखो, दूसरे साइड पे B क्या रहेगा, एक साइड पे H रहेगा, एक साइड पे डबल बॉन्ड O रहेगा, नीचे वाला जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन है. सो इट इज नॉट अटैच्ड टू इट 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 नहीं, वो 3 रहेगा. ये वाला एक ग्रुप रहेगा, ऑक्सीजन वाला एक हाइड्रोजन, 3 ही रहेगा, नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप. सो इट इज ए कायरल कंपाउंड, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन. ठीक है, बट आफ्टर साइक्लेशन when this OH group of carbon number 5 will react with the aldehyde, so there is a cyclization like this, cyclization, cyclic structure बनेगा. एंड आफ्टर द साइक्लाइजेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जो पहला कार्बन था वही अल्डिहाइड वाला, नाउ अल्डिहाइड वाला कार्बन एसिमेट्रिक था, सॉरी सिमेट्रिक था, मतलब ए कायरल था, अभी क्या बन गया, एसिमेट्रिक बन गया और कायरल बन गया, एसिमेट्रिक बन गया और कायरल बन गया, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन. इसको ये कार्बन अभी क्या बन गया, एसिमेट्रिक, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन और anomeric carbon or anomeric carbon. Difference in the arrangement of hydrogen and hydroxyl group on the arrangement of difference in the arrangement of hydrogen and hydroxyl group on the anomeric carbon with respect to this terminal hydroxyl group known as anomerism. There are two types of anomers of glucose. ये क्या है, डी ग्लूकोज, दोनों में स्ट्रक्चर क्या है, डी ग्लूकोज. आदित्य लवकर यायचं, 6 वाजता सेशन असणार आहे, मंडे ट्यूजडे एंड फ्रायडे 6 to 8 PM. तुमच्या बॅचचं ठरलंय 6 to 8 PM. ठीक है, 5 वाजता घेणार होतं, पण आजकल जीपैट जो है इजी नहीं है, आपको प्रॉपरली प्रेजेंस देना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली लेक्चर्स करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है, वोलेटाइल है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, conversion cyclization, this carbon will become chiral carbon, and depending on the hydrogen and hydroxide ion hydroxyl ion arrangement respect to this carbon, this hydroxyl. So there are two isomers. Okay, so both are the structure, देखो यहाँ पे दो glucose, both are the structure of D glucose, but there is only only one difference. But what is the difference? You can see in this first structure, OH group of anomeric carbon, OH group of anomeric carbon is on the same side as that of the hydroxyl group of terminal alcohol containing carbon. So it is known as alpha. It is known as alpha. Okay. Now in this case, the hydroxyl group on a anomeric carbon, which is opposite to that of the terminal alcohol group, so it is known as a beta. Both are the dextro D glucose. ये दोनों भी क्या है, D glucose है, लेकिन D glucose है, लेकिन आफ्टर साइक्लाइजेशन जब होता है उसका, सो फर्स्ट कार्बन जो है वो सिमेट्रिक होता है बिफोर साइक्लाइजेशन, लाइक इन दिस केस. अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो पहला जो कार्बन है आपका वो क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब ए कायरल है, ये कायरल नहीं है, ए कायरल और सिमेट्रिक है, बट आफ्टर साइक्लाइजेशन इट विल बिकम ए कायरल और
asymmetric. Asymmetric, right? Now this asymmetric can be called as a anomeric carbon. Now it is known as a anomeric carbon, asymmetric or anomeric. Now arrangement of hydroxyl and hydrogen on an anomeric carbon, configuration of hydrogen or hydroxyl ion or hydroxyl group at an anomeric carbon atom. Okay, so they are known as anomerism, and due to this there is a isomerism again. Okay, double isomer, so known as anomerism. Okay, now if hydroxyl group on the same side as that of the terminal alcohol group, known as a alpha anomer, and if hydroxyl group on an anomeric carbon atom is on opposite side as that of the terminal alcohol group, known as a beta anomer. Okay, because both are the structure of D glucose. ये ग्लूकोज ही है, दोनों भी क्या है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, लिवो वाला नहीं, लिवो तो वो अलग है, ये डेक्स्ट्रो का ही, उसमें भी डेक्स्ट्रो में भी दो आया है, कौन सा, अल्फा एंड बीटा. Okay, so they are known as anomers. So difference in the configuration or arrangement of hydrogen and hydroxyl group on an anomeric carbon atom known as anomers. Okay, so we'll see here. So due to cyclic structure, ये वही description है इसका. So carbon number 5 of alcohol group, C5 alcohol group, OH group of C5 reacts with the functional group aldehyde or ketone, and there is cyclization of structure. Open chain D glucose is known as aldehyde. D glucose भी उसमें aldehyde होता है, and जो aldehyde containing carbon है वो symmetric होता है और achiral होता है. ठीक है, when aldehyde condenses with the OH of C5, so there is a cyclization, and first carbon on which there was a functional group. Now previously it was a symmetric, but now it will become asymmetric, and because of that there is again isomerism, known as a two different cyclic form of glucose are formed, known as alpha D glucose, on which OH of anomeric carbon is on a right side, and beta D glucose, so on which OH of anomeric carbon is on a left side. I have shown you the structure. Now anomers and anomeric carbon क्या आता है, बोला है already मैंने. C1 carbon number 1 after cyclization become asymmetric, and two cyclic form of D glucose, known as alpha and beta, have different optical rotations, but they will have a same basic structure. वो D glucose ही है, लेकिन cyclization होने के बाद में उनमें और isomerism आ गया. Okay, उसको बोलेंगे alpha. That's why alpha D glucose. That's why alpha D glucose, beta D glucose, DA. Now they will have same basic component, whole basic component, but they are mirror images of each other, and they are known as anomers of each other. And carbon number 1 is known as anomeric carbon. Number 1 is known as anomeric carbon. Okay, I have shown you the structure. तो एनोमेरिज्म इसके ऊपर GPAT 2020 में क्वेश्चन आ चुका है. Cyclic form of alpha D glucose and beta D glucose, they are known as anomers of each other. When C5OH will react with the aldehyde or ketone group, there is a cyclization of structure, and after cyclization carbon number 1 will become asymmetric, and depending on the arrangement of hydrogen and OH group on anomeric carbon atom with respect to terminal alcoholic group, known as alpha and beta anomers. So if OH group is on a right side, देखो यहाँ पे right side पे, so that is known as alpha anomer, and if it is on a left side, that is known as a beta anomer. So alpha and beta forms of D glucose, known as anomers of. Now next term is epimers. Next होता है epimer. Epimer क्या होता है? Epimer is nothing but the two sugars. अगर दो sugar, when two sugar differs in the configuration at a single carbon other than anomeric carbon. क्या लिखा है देखो, अंडरलाइन करो, other than anomeric carbon. Anomeric carbon कौन सा है? ये वाला पहला. ये इसको छोड़ के दूसरा के ऊपर अगर हाइड्रोजन एंड OH एंड दिस, ये दूसरे कार्बन के ऊपर अगर अरेंजमेंट डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे इपीमर्स. व्हेन इफ टू शुगर्स differs in their configuration at a single carbon other than anomeric carbon, they are known as epimers. For example, glucose and galactose, they are the C4 epimers. Glucose and mannose, they are the C2 epimers. Glucose and mannose, they are the C2 epimers. कैसे देखो, this is the structure of your glucose, ये glucose का structure है आपका. This is the structure of your
मैनोज, ये मैनोज का स्ट्रक्चर कौन सा, ये वाला, ये वाला। यू कैन सी ग्लूकोज एंड मैनोज विल हैव सेम स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे, ये देखो बाकी सभी स्ट्रक्चर सेम है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। ओके, अदर देन एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन के ऊपर नहीं चाहिए। ओके, सो if two sugars differs in the configuration at a single carbon other than the anomeric carbon, they are known as epimers। और वो कार्बन कौन सा है, उसके बेसिस के ऊपर उसका कौन सा इपिमर है। मैनोज एंड ग्लूकोज में डिफरेंस किसके ऊपर है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर है। दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड मैनोज दे आर नोन एज C2। ओके, दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड मैनोज दे आर नोन एज C2 epimers, बिकॉज डिफरेंस इज कहाँ पे, डिफरेंस कहाँ पे ग्लूकोज और मैनोज में, कार्बन नंबर 2 के ऊपर है, ठीक है, सिंगल कार्बन के ऊपर है, अदर देन एनोमेरिक कार्बन। So it is known as a C2 epimers। कार्बन नंबर 2 के ऊपर डिफरेंस है तो C2 epimers। Likewise ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इनका डिफरेंस कहाँ पे, C4 में है। So that's why glucose galactose they are known as C4 epimers and glucose and mannose they are known as C2 epimers। इसके ऊपर कम से कम 3 बार क्वेश्चन हो चुका कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर डैश डैश epimers, glucose and mannose are dash dash epimers। Okay, and the formation of epimer they are known as a epimerization। The process is known as a epimerization। Mutar rotation, mutar rotation क्या है देखो। So alpha and beta form of D glucose known as anomers of each other। When glucose is dissolved in the solution, change in the specific optical rotation because of the interconversion of alpha and beta form of D glucose to get an equilibrium mixture known as a mutar rotation। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Now glucose solution mutar rotation, solution of aldohexose solution। Are you able to hear me properly? आवाज आ रहा है आपको, साउंड आ रहा है क्या, समझ रहा है क्या आपको। सो ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज शुगर जो है आपका, ग्लूकोज शुगर क्रिस्टलाइन होता है ना, ग्लूकोज इज क्रिस्टलाइन। ओके, सो aldohexose means glucose। Okay, so glucose crystalline, so glucose in the crystalline form will have a alpha configuration, will have a alpha configuration। Okay, but when it is dissolved in the water, so alpha configuration changes to a intermediate and lastly is to stable conformation beta। Glucose का crystalline, glucose in a crystalline form, the configuration when D glucose in a crystalline form, its configuration in a crystalline state is alpha anomer। Okay, then when it is dissolved in the water, so alpha anomer changes to a intermediate and lastly changes to a beta। So interconversion of alpha and beta anomeric form of D glucose when they are dissolved in the solution, that is known as a mutar rotation। कैसे होता है देखो यहाँ, इसका डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, क्लियर होना चाहिए चैप्टर। Aldohexoses are placed in the optical path and after passing the plane polarized light, so initial optical rotation shown by sugar, initial optical rotation shown by sugar changes gradually। जो पहला ऑप्टिकल रोटेशन इमीडिएटली दिखाया वो बाद में चेंज होता है। सो इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन of the solution of sugar changes gradually until a constant fixed rotation is reached। एक constant value तक आएगा। This phenomenon of change in the optical rotation, this phenomenon of change in the optical rotation when sugars are dissolved in the solution, it is known as a mutar rotation। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। What is mutar rotation? So change in the optical rotation of a sugar when it is dissolved in the water due to interconversion of alpha and beta anomers of D glucose is known as a mutar rotation। Simple, mutar rotation, mu for mutual, rotation for change। Okay, so mutually rotate करते हैं वो plane polarized। So optical rotation जो initial solution का है वो एक particular value आएगा। से for example यहाँ पे example भी है, ठीक है। So initially, okay, initially the solution of alpha D glucose, initially the solution of alpha D glucose will show the optical rotation known as a plus 112 डिग्री, 112 डिग्री। प्लस क्यों लिखा है, डेक्स्ट्रो है इसलिए, डी ग्लूकोज इसलिए। सो अल्फा डी ग्लूकोज विल शो
optical rotation 112 initially, but it changes gradually. ये change होता है, it changes gradually to a intermediate rotation known as a plus 52 degree. ओके, मतलब ये 112 डिग्री का 52 डिग्री तक आएगा और उसके बाद में फिर से चेंज होके 19 डिग्री पे आएगा. So initial solution of glucose has an optical rotation plus 112 degree. It changes to a intermediate hemiacetal form plus having optical rotation plus 52.5 degree, and lastly it gets stable beta D glucose form which has optical rotation of plus 19 degree. So this change in the optical rotation, change in the optical rotation, this change in the optical rotation, पहले था 112, बाद में हो गया 52 और बाद में हो गया 19. Change in the optical rotation due to interconversion of alpha and beta form in the solution known as a mutual rotation. It was observed by first time the ternate. Ternate shown the experiment that initial is a ternate thing. And in the final solution, the glucose solution, in the final glucose solution, 2/3 sugar exists in the beta form and 1/3 exists in the alpha form. तो एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इन द फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, 2/3 sugar exists in a beta form, 2/3 sugar exists in a beta form and 1/3 exists in a alpha form. तो बोलो which form of D glucose is more stable, which anomeric form of D glucose is more stable. Remember beta form is more stable, that's why final solution has a more beta form कि वो stable है इसलिए beta ज़्यादा रहता है. So beta form of alpha D glucose, or sorry, beta D glucose is more stable than alpha D glucose. So remember, okay, so beta D glucose is more stable than alpha D glucose. Now pyranose and furanose structure of, तो देखो this scientist Haworth in 1929 suggested that ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग जो है उसको बोलते हैं पायरानोज, उसके जैसे दिखता है. सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विल लुक लाइक ए 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ पायरानोज एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज अ पायरानोज. ऐसा हैवर्थ ने बोला था. क्यों बोला था उसको पायरानोज? बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विल लुक लाइक अ पायरान स्ट्रक्चर which will also have a same 5 membered ring, carbon ring and oxygen. That's why it can be called as a pyranose. And similarly, in the similar way, 5 membered ring of fructose can be called as a furanose because it will look like a furan ring. That's it. In epimers and epimerization we have seen, okay, when two sugars differs in the configuration at a single carbon atom, and two sugars differs in the configuration at a single carbon atom other than anomeric carbon, they are known as the epimers. So glucose and galactose are C4 epimers. Question आ चुका है. Glucose and mannose are C2